बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने जो है ये स्टडी स्टार्ट किया था यू विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। वहाँ हमने बेसिक्स उसका जो है क्लियर किया था in a concise manner. Now today we'll be taking the second part of the same, which actually is the Beer-Lambert Law. In today's lecture we'll be dealing with some of the basic application part which usually comes in the competitive exams or the short answer type exams. तो we'll start. हमने कहा था Beer-Lambert Law is basically absorbance is equivalent to epsilon CL. तो हमने कहा था ये कहाँ से हमने जो है डिराइव किया था कि एक कंटेनर है या एक सेल है जिसमें कोई कंपाउंड रखा हुआ है, कोई भी सॉल्यूशन मटेरियल रखा हुआ है जिसका कंसंट्रेशन है C, ठीक, एंड जिसकी कंसंट्रेशन है C and the thickness is L. Now when a light is incident on it, which is either of UV or visible, here we are dealing with the ultraviolet visible spectroscopy or electron spectroscopy. Now the molecule, the solution will absorb some intensity of light. Let us say the intensity was I0, instant one, and obviously the one which comes out, it will be a weaker intensity, it is I. So from the Beer-Lambert law, we arrived at the absorbance. This particular absorbance by the solution is called molar extinction coefficient or absorption coefficient multiplied by the concentration. If the concentration of this solution is C, and multiplied with the path length. Now the important term is absorbance. So if concentration is more, and that means absorbance is more, that means if path length, if you increase the path length, so that will also get absorbance will get increased. But जो instruments में होते हैं उनमें जो cell होती है that's fixed as 1 centimeter. तो instrument का जो cell है the path length is 1 centimeter fixed होती है. That's why we use here molar extinction coefficient in case when we use the concentration 1 mole. Okay. Now absorbance हमने कहा था that is basically log of I0. ये बहुत important कि इस पे आज जो बहुत numericals आते हैं. It looks a simple problem but then we get confused. Now this is log 10. This is very important. This is basically log 10. यहाँ बार बार तो नहीं दोहराऊंगा. This is log 10. इसको हम natural log कहते हैं. I0 by I. So I0 by I. और then उसके बाद अगर ये absorbance है तो एक इंसान माइंड बना लेता है कितना transmittance will be absorbance because total A plus transmittance plus absorbance, the total intensity is 100, then what comes out if you minus that much is absorbance, ठीक. लेकिन ऐसा होता नहीं क्योंकि transmittance हमने बोला था कल that is fraction of the light transmitted, that's I by I0. तो अब दोनों को देख सकते हैं this is transmittance and इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करें हम लोग then it becomes transmittance percentage. And same is the case when it becomes 100 multiplied, it becomes absorbance percentage. Fine. Okay. So now, so transmittance, absorbance is logarithmic 1, and that too it is I0 by I1, and transmittance it is I by I0. It's actually simply the fraction of the light that is transmitted. Okay. So transmittance, absorbance is logarithmic 1. So absorbance is logarithmic 1. So absorbance is basically logarithmic. Well, this is simple the fraction of light transmitted. Fraction of light transmitted. ये बहुत important है so that the confusion gets removed. ठीक. अब इसका मतलब है if we try to correlate this and this, then we'll end up with a relation
एक रिलेशन हमारे पास ये है, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है सारी, जो हमने कल भी बोली थी, दैट ट्रांसमिटेंस इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस एब्जॉर्बेंस। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब यहाँ उनको आराम से आप कर सकते हो, यू कैन एक्चुअली गेट देम इजीली। मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ बिकॉज नॉट वेस्ट द टाइम, because our focus is not to look at the derivations. ठीक, now that's one relationship of it. दूसरा एंगल इस चीज को देख सकते हो। अब देखिए यहाँ I0 by I है, that means if we see that A, we can see like this, A is equal to that something minus of log t, because this we substitute here, हम भी कह सकते हैं A is equal to minus log of t. So that's also one relation. It's basically the same one. अब देखिए इसको आप 10 to the power में लीजिए, so the A 10 to 10 transmittance is equal to this, so absorbance is equal to this. Fine. So this is the absorbance and this is the transmittance, the relation. So they are not the inverse, rather, so there's not any inverse relationship between absorbance and the transmittance. So ये बहुत important है। इसका मतलब है, if sometimes we say that if somewhere 50% of the photons of monochromatic light are absorbed by the solution, that means the transmittance is 0.5. Oh, that does not mean absorbance is 0.5. Remember this. So that does not mean absorbance is 0.5. क्योंकि यहाँ पे थोड़ा धोखा लगता है। अब if you have a question, और हमारे पास कोई question आया the Beer-Lambert Law, कि अगर transmittance is, for example, if there's a question that if the transmittance of a solution is the transmittance of solution is, let us say, the 50%. If that is 50%, so what we need to do is you have to calculate the absorbance. ठीक, यहाँ धोखा लगता है, you can do, अगर ये transmittance 50 है, चूंकि इसका reverse है, so it should be 50-50. The first thing हमें remember करना है कि they are this and this, A and T, they are not inversely correlated. A is logarithmic, it is simply the fraction of the light transmitted. In this case, we'll use a formula, बहुत simple formula, A is equal to, so a formula for calculating the numericals, A is equal to 2 minus, it's basically यहीं से derived है ये formula, A is equal to 2 minus log of transmittance. Right? So A is equal to 2 minus log of transmittance. तो अगर हम यहाँ पे ये वाला रिलेशन अप्लाई करेंगे, so we'll end up with 2 minus log of 50. Fine. 2 minus log of 50. So अगर log 10 of 50 करेंगे, log 10 of 50, so we'll end up with 2 minus, that's 2 minus, that is 1 point, around 1.69. So that is 1.69 8. So that is equivalent to around 0.3. So that means it turns out that your absorbance is 0.3. Absorbance is 0.3. Or you can, if you multiply it by 100, you will end up with this is absorbance is equal to 31%. So absorbance is 0.31. So fine. तो इस तरह से आप निकाल सकते हो. Likely if you have example question now, we have one more question. We have question 2. Now if we have
if transmittance is given to be 0. यहाँ पे देखिए it was in percentage. It can be sometimes without percentage also if it is 0.99. So what we have to do is we have to calculate the absorbance. So calculate the absorbance. ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा पहला स्टेप होगा that will convert this transmittance into percentage. So we'll do transmittance into percentage. वो कैसे होगा, that is this value multiplied by 100, so that is 99.9%. So that is 99.9%. Now we'll use our formula that absorbance is equivalent to 2 minus log of transmittance as a percentage, 2 minus log of 99.9. So you will end up with, so log of 99.9, it's around 1.999. So that is 2 minus 1.999. So that is 0. This is 001, 2 minus. This is the value of the absorbance now. So this is the value of absorbance. So you can say it is, if you got the percentage, it is 0.1%, then multiply 100. So this way we can actually solve it. Just remember this relationship, it's very important. Absorbance is equal to 2 minus log T. You can take this also, remember this, you can remember this. So the relation is not the inverse, it's basically the logarithmic relationship. ठीक है ना. अब Beer-Lambert Law के बारे में एक लास्ट पॉइंट ये हमें जो याद रखना है यहाँ पे कि इज इट वैलिड ऑलवेज दिस Beer-Lambert Law? नो, उसके लिए कुछ हमारे पास, यानी इफ यू प्लॉट दिस वन पॉइंट, जैसे हमने कहा था, नाउ सम लिमिटेशंस, सम माइनर लिमिटेशंस. Now as A is equivalent to epsilon CL, so that means A is directly proportional to the concentration. मैंने कहा कि length instruments में जो cell होती है वो fix होती है. So if you plot a graph between absorbance and the concentration, we should always get a graph which is like a straight curve, because they are directly related. लेकिन ऐसा always नहीं होता है. If you get a straight curve, that means the solution holds the Beer-Lambert law. But ऐसा होता नहीं. There are certain situations where the Beer-Lambert law doesn't hold as good. Number one, when solutions are concentrated, when concentration is high. Number two, जो molecule हमारे पास है, जो molecule that will not undergo any dissociation, molecule breakdown, or any association. Number three, that means the molecule will not undergo any chemical reaction. हमने इसको dissolve किया, there should be not any chemical reaction. ये भी लिख सकते हैं कि जो मीडियम है जिसमें हम मॉलिक्यूल को डिसॉल्व करते हैं, ड्यूरिंग दिस एनालिसिस देयर शुड नॉट बी चेंज इन द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम. हर मीडियम का अपना अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. सो देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम. There should not be any change. There should not be any chemical reaction. Should not be any dissociation, association. यहाँ important factor है कि concentration should not be high. So इसका मतलब है कि Beer-Lambert's law, while you get a straight curve, it is valid when your solution is dilute. So in general, Beer-Lambert law hold is good for dilute solutions. ये बहुत ही important है.
So Beer-Lambert Law holds good when your solution is dilute. That means you have basically this so you have the concentration is very, very less. So Beer-Lambert Law holds very, very good. So this is all about the Beer-Lambert Law and the basics, जिसमें एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं. उसके अलावा जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड दिस डायरेक्ट कांस्टेंट मीडियम मीन्स द सेम थिंग. और भी एक फैक्टर है, फॉर एग्जांपल ये हो सकता है कि समटाइम्स मॉलिक्यूल को जब हम एक्साइट करते हैं उसके बाद इट अंडरगोज डी एक्साइटेशन. जैसे हमने यहाँ पे कहा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होने से मॉलिक्यूल विल गो फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 2. अब वापस आने में इट कैन नॉट फॉलो दिस पाथ समटाइम्स. तो वो फिनोमिनाज आते हैं फ्लोरेसेंस, फास्फोरेसेंस में जो हम देखते हैं थ्रू जेबलॉन्स की डायग्राम, वो शायद आगे आ जाए. सो इफ मॉलिक्यूल अंडरगोज फ्लोरेसेंस एंड फास्फोरेसेंस फिनोमिना, the molecule undergoes fluorescence or phosphorescence type phenomena. It doesn't hold as the Beer-Lambert law good. So it will not give a straight line. Likely if you have one more point, अगर मीडियम आपका प्रॉपरली होमोजीनियस नहीं है, जैसे इट शुड नॉट बी ए क्लियर सोल्यूशन, होमोजीनियस मीडियम नहीं है, रादर इसमें स्कैटरिंग पार्टिकल्स, कुछ ऐसा सोल्यूशन बनाए जिसमें पार्टिकल स्कैटरिंग है, देन इट विल नॉट होल्ड गुड. सो यू शुड नॉट हैव, देयर शुड बी नो स्कैटरिंग issues. There should be no scattering of light. क्योंकि आपका सोल्यूशन प्रॉपर बनानी है. द सोल्यूशन इज नॉट स्टेबल. इसलिए समटाइम जब हम सोल्यूशन बनाते हैं किसी भी कंपाउंड का, किसी भी मटेरियल का, तो विल कीप इट सेटल डाउन फॉर सम टाइम सो दैट बिकम्स होमोजीनियस. इफ एट ऑल देयर इज इम्प्योरिटी, यू फिल्टर इट और इसको लेट इट सेटल डाउन, देन यू टेक द curve in the usual spectrophotometer. So this is all about the basic portion जो एग्जाम में पूछा जाता है about the Beer-Lambert law. हमने इसको कवर किया है फर्स्ट पार्ट में. टुडे इंशाल्लाह दिस विल बी सेकंड पार्ट. होप यू एंजॉयड. इंशाल्लाह दिस इज ऑल फॉर द डे.